All right, assalamu alaikum everybody. I hope. Okay, so I hope I am much audible. Welcome to the online lecture series for AS Chemistry Chapter 1. We're going to start. Humne in the last class we discussed a general concept about microscopes as well as the cell. And we all know the cells are now basic unit of life. Okay, now I'm sharing the screen and we'll be starting off with the chapter formula. So today हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे about concept जो first chapter के अंदर there are 2 and 3 basic concepts जो कि different concepts बनाते हैं. So the very first concept is about the microscopes and the microscopy. We'll be talking about them in detail. Now, okay, so I hope the presentation is visible to you. We'll be talking about the chapter 1 is biology and the microscopes in it, our topics, goes to the projectors. Okay, right. So the basic concept, the concept from book is that there are two fundamentally different types of microscopes nowadays: light microscopes and the electron microscopes, both in the form of radiation in order to create a range of spectrum. Examine light microscope is light as the source of radiation, while the electron microscope is the electrons for using the target as light. There are two basic types of microscopes we are going to use in their biology, and whenever you going to be practical, it's going to be using one type of microscope as technology goes. So two types of microscopes are the first one is the light microscope, and the second one is the electron microscope. Okay. Now, electron microscope, we want to take it whatever your video knowledge and see that how is it different with light microscope. As well as that there are two types of electron microscope. Scanning electron microscope and the other one is light electron microscope. What would be the slide? This is basically a rough idea and a rough way about it. So paragraphy, light microscope and electron microscope is divided into scanning electron microscope and transmission electron microscope. Usually, basic differentiation testing. You can only start off with everything as your equipment and really difficult. Do you can't hear me? Hello. All right, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी? Hello. आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आई थी? Hello. Am I audible to everyone? Okay, आप लोग बता सकते थे? Simple guys. All right, I hope कि अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी. I will be starting the lecture again, once again. हम
इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. So today the chapter in focus, or the part of the chapter in focus, is the microscopy. जैसे I told earlier, आप लोगों को सब भी नहीं आवाज आ रही होगी hopefully, कि there are 3 or 4 basic concepts in your first chapter of the ES biology, namely which are the microscopes, the cell structures, and different part in the A2 biology. We are हमने basic discuss किया था about what is the cells, and we discussed a basic concept about what are microscopes, right? So now we are going to discuss in details the basic concept जो कि AS biology require करती है कि किस तरह से आपको पता होना चाहिए about the microscopes. So a basic concept, a book concept I read अब तुमको जब आवाज नहीं आ रही थी तो there are 2 fundamentally different types of microscopes now in use: the light microscope and the electron microscopes. Both use a form of radiation in order to create an image of the specimen being examined. The light microscopes uses light source as a source of radiation, while the electron microscopes uses electron for reasons which are discussed later. So there are 2 types of microscopes in the AS study, namely the light microscopes and the electron microscopes. Very much clear from the name light microscope, हम इसको किस तरह से use करेंगे through light sources, and the electron microscopes हमें पता होगा, हमें इसके name से हमें पता है कि इसमें electrons use होंगे. Purpose दोनों का सेम है, to magnify images, to create image of the specimen. And what is basically specimen हम लोगों ने discuss किया था, we'll be discussing it further today. So this is a basic idea about the differentiation between the light microscopes, the electron microscopes, and the transmission electron microscopes, and scanning electron microscopes, and the transmission electron microscopes being example of the electron microscope. Okay. अच्छा, now why do we need to study this, और हमें इसके बारे में पता होना क्यों जरूरी है? Why? Because जो आपके AS के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर वेरी मच कुछ चीजें इसके अंदर से आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियम पता होना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप्स का मीडियम क्या है. लाइट माइक्रोस्कोप्स का मीडियम विल बी दी लाइट बीम, एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का, चाहे वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हो या फिर चाहे वो transmission electron microscopes, so unka medium will always be the electron beam. And now one of the very significant and important differentiation is ke dimensions kis tarah ki light microscope ki picture which we'll be observing later, wo hamesha wo image 2D hogi, while the scanning electron microscope, which is an example of the electron microscope, will always be producing a 3-dimensional photograph, right? Okay, and then again the transmission electron microscopes will be producing a 2-dimensional image. The maximum magnification and the maximum resolutions are one of the important, really important, you can say concepts or the points जो कि हमें इनके अंदर याद रखने हैं. Whenever आपसे कोई question or whenever कोई MCQ आपसे demand करेगा about the resolution or the magnification of the light microscopes or the electron microscopes, तो आपको इनकी values का पता होना चाहिए. What I mean is कि ये दोनों tables जो हैं आपको याद होने चाहिए ताकि आप जो है वो अपने questions कर सकें as well as your आपके जो MCQs है उसमें हेल्प कर सकें. अब हमें इसको याद करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज अब ये लाइट माइक्रोस्कोप की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की वैल्यू, ये आपको जब कैलकुलेशंस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, इनकी कैलकुलेशंस, इनकी पिक्चर्स की कैलकुलेशन जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हमें ये याद करने पड़ेंगे. बिकॉज उस वक्त एग्जाम में ना तो ये स्लाइड्स होंगी ना कोई आपको ये बताने वाला होगा, राइट? तो आई होप कि इट्स रेजिंग.
Moving towards the next slide. Now this is a basic, very important concept. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें समझने के लिए. It's really important. Magnification, resolutions, the key of this chapters. Microscopy के अंदर one of the important things ये होंगे. Now, what is magnification? Magnification is how much bigger the image is compared to the original object viewed with the naked eye. कितनी बड़ी एक alright, कितनी बड़ी एक image produce हो सकती है is the magnification. Or in easy words, we can say that magnification is basically the process of enlarging specimens for observation and measurements using microscopes. And using what type of microscopes? Using electron microscopes or the light microscopes. And why do we need magnification? या magnification का phenomena जो है वो क्यों हमें चाहिए होता है? Because we know that cells cannot be seen with the naked eye, and magnification allows us to see them with the naked eye. The formula, the general formula of the magnification is the size of the image and the size of object. You will be much more clearer about this when you will be doing questions, which we'll be doing in the next class, obviously. तो आपको पता चलेगा, obviously आप लोगों ने O levels में तो किया ही होगा, but yes, the size of the image and size of the object को हम divide करेंगे to find the original magnification of an image. And इसका process क्या होगा? इसका process ये होगा कि एक question होगा, आपको एक दिया जाएगा question, and you will be given it's the size of the image, और magnification दी जाएगी आपको, आप size of object find करेंगे, या कभी आपको वो size of object देंगे और magnification देंगे तो आप उसका size of image find करेंगे. तो एक पूरे concept की तरह ये चलता जाएगा. Now, to prepare slides for light microscopy, this specimen must be very important. जब भी आप अपने स्कूल में भी या कॉलेज में भी जब भी आप अपनी स्लाइड्स को, स्पेसिमेंस को प्रिपेयर करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, तो यू विल बी ऑलवेज नीडिंग कि आपका एक स्पेसिमेन डिहाइड्रेटेड हो, embedded in wax and sectioned हो, stained हो और mounted हो. अब हमें ये चीज़ें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? हमें चीज़ें पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि when we will be doing the practicals, मतलब हम तो नहीं कर सकेंगे obviously, but when you will be doing in the lab, तो जब आप एक lab report form out करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 4 चीज़ों का होना कितना important है, या अगर आप इन 4 चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो फिर you will be getting to know कि आपका result, आपकी magnification या आपकी resolution, why is it not clear. तो ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें, इसी तरह की 4 चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी याद रखनी पड़ेंगी कि एक स्पेसिमेन को क्रिएट करते हुए, एंड व्हाई आर वी क्रिएटिंग स्पेसिमेन. ये स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन वो चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो डिहाइड्रेटेड होगी, उसमें कोई वाटर नहीं होगा. वैक्स में उसको डाला जाएगा, सेक्शंस में रखा जाएगा, स्टेन्ड होगी और माउंटेड होगी. माउंटेड किस में होगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपकी पेट्री डिश के अंदर माउंटेड होगी, राइट. तो नाउ स्टेनिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज कंट्रास्ट इन अ स्पेसिमेन. स्पेसिमेन को ज्यादा अच्छा क्लियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल बी यूजिंग द स्टेनिंग, ताकि आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी form out हो आपके eyepiece के अंदर. In order to observe the transparent and colorless structures, obviously stain work by binding to different types of molecules or cell structures. This allows different components of cells to be identified and is known as differential staining. Differential staining क्या है? Differential staining में क्या होगा कि different parts आपके different components of के cell identify हो जाएंगे. For example, if we hypothetically talking about, अगर हम एक ant को observe करना चाहें light microscope के through, तो staining क्या करेगा? हमें ant के जो eyes हैं वो बता देगा किस कलर में या किस जगह पे है. Staining क्या करेगा कि legs को बता देगा कि ये particular piece of the image is the legs of an ant, and इसी तरह से other structures of an ant.
Now we are going to watch a very short video about the microscopes, and then we'll revert back to the lecture. Light microscopes of the kind seen here are very different from electron microscopes. You might recognise the light microscope from your school lab. But electron microscopes you're highly unlikely to see in your school lab. First of all, they're much more expensive, and high school labs don't really have a need for them. Now, one of the main differences between the light microscope and the electron microscope are their resolution. The electron microscope has a much higher resolution than the light microscope. But what does this mean? Well, resolution is defined as the smallest distance between 2 points that can still be distinguished as two separate entities. So in practical terms, this means that the smallest distance that you can tell 2 points apart using a light microscope is 200 nanometers. But for an electron microscope, it can go much further than that. It has a higher resolution. It can tell ओके सो अभी तक इस वीडियो में उसने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप की एंड इसी तरह से जो हमने अपनी स्लाइड में ऑब्जर्व किया था बहुत ही 0.1 नैनोमीटर्स एंड 200 नैनोमीटर्स की लाइट माइक्रोस्कोप्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह से रेजोल्यूशन more distance between 2 points that can just to split and to the entities is the resolution. And I will also share a very simple example or very simple definition of resolution you can write somewhere. Okay, resolution is a measure of the level of detail that can be seen using a microscope. क्या मतलब है कि हम कितने अच्छे तरीके से, कितने वाज़ेह तरीके से, कितने डिटेल तरीके से एक स्पेसिमेन की क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, which is the resolution. And remember that resolution and magnifications are very much, or you can say that they are very different things from each other. The microscope is 200 nanometers. So but for an electron microscope, it can go much further than that. It has a higher resolution. It can tell apart 2 points that are just 0.1 nanometers apart. So for us as biologists, this means that if we use a light microscope, we can view cells, but we can't view organelles because the organelles are too small. If we use an electron microscope, however, because it has a higher resolution and is able to distinguish between 2 points that are much closer together, we can see organelles such as mitochondria, the endoplasmic reticulum, and membranes. Now, that's as much as you really need to know for the IB, but if I've caught your curiosity and you're still with me, here's a little more detailed of an explanation. The resolution of those microscopes depends on the wavelength of the illumination source. In other words, okay, so अब आप लोग इसको सिर्फ अभी समझें, ठीक है कि what is he talking about, and we'll be later studying about the wavelength of the illumination source. Okay. The light on the light microscope or the electrons on the electron microscope. Any object that you're trying to look at that is less than half of the wavelength of that source will not be visible. Now, the shortest wavelength of visible light is approximately 400 nanometers, actually a little lower than that, but for all intents and purposes, we'll go with 400. So therefore, the best resolution of a light microscope is half of that wavelength, which is 200 nanometers, and that's what we referred to earlier. Electron beams have a much shorter wavelength. Therefore, their best resolution is going to be a much shorter distance between 2 points. Their best resolution is 0.1 nanometers. In fact, there are apparently some electron microscopes that now can resolve to 0.05 nanometers. So if you're still with me at this point, let's just try and make some meaning of these units of nanometers. So 1 nanometer is 1 times 10 to the minus 9 meters. So it's a very, very small distance between 2 points. So therefore 2 nanometers is 2 times 10 to the minus 9 meters.
you can see that is much higher resolution because it can distinguish between 2 points that are much closer together than our light. Okay, so basically she is trying to tell कि light microscope की किस तरह से resolution है और electron microscope की किस तरह से resolution है और किस तरह से वो differentiate कर रहा है कि अगर हम इस चीज़ को support करना चाहें कि why is the resolution of electron microscope is high, तो हम इस पूरी calculation के through proof कर सकते हैं कि with 200 nanometers we'll be getting 0.000002 meters. तो एक ये बहुत precise value है. Light microscope that has a resolution of 200 nanometers. This is a bigger number, 2 times 10 to the minus 7 meters, and that's because it can only distinguish between 2 points that are further apart than the two that the electron microscope can distinguish between. All right, so this was a short video and इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं इसके अंदर और देखना या observe करना, right? So now sorry, just a second. How does such a microscope work? The optical microscope has been known since the 7th. Okay, so now we'll be going to see a video about the light microscope, and then we'll be going to talk further कि light microscope को हम पूरा dissect करेंगे कि उसका तरीका क्या है, how is it going to work, and what are the parts included in a light microscope. Okay. Awesome screen. Awesome. How does a microscope work? A microscope works much like a telescope. An objective lens gathers light and focuses it inside the body of the microscope. Then the eyepiece lens, called the ocular lens, magnifies the tightly compressed light up to the size of your eye. On a telescope, you generally exchange the ocular lens to change. Now वो इसके अंदर आपको बता रहा है कि एक ocular lens है जो कि magnification को support कर रहा है. Magnification power. On a microscope, you change the objective lens and the ocular lens and multiply the magnification factors to determine the total visual magnification. The objective lens of a microscope is more spherical, which is what gives it a tight focal length. The ocular lens often has another lens attached with a negligible magnification level. Its purpose is to flip the image so the viewer is not observing it inverted or upside down. Now, another video, another short video for the optical This presentation outlines the main parts of a compound light microscope. It also briefly describes the functions of these parts. So, let's begin. Now see this video very carefully. आपको बड़े अच्छे तरीके से वो बताएगा कि how is a light microscope, किस तरह से उसमें changes हैं, किस तरह से it's going to work. Basically, function and purpose of the
consequence जिसके through ये बनता है light microscopes. The eyepiece lens. It's also known as the ocular lens, and it is the first point of magnification with a 10 times or 15 times magnification. The barrel. It is also known as the body tube. The barrel connects the eyepiece lens to the objective lens, which we'll look at in a minute. The arm. The arm is like the backbone to the microscope. It raises the objective lenses above the stage and is also the place where we use to carry the microscope from one place to another. The objective lenses. This is the second point of magnification. They revolve around on what is called the nosepiece. There are usually 4 objective lenses, color-coded for easy recognition. The 4 times is red, 10 times is yellow. Okay, so अब ये different magnification values हैं, like उसने कहा कि 4 times, 10 times, 40 times and 100 times, ये आपको different resolutions or different magnification provide करेंगी, and it's one of the, you can say कि एक positive quality है आपके light microscope की. 40 times is blue, and the oil immersion lens 100 times is grey. The stage. This is the platform where the slide is placed for viewing. The slide is attached to the stage by using the slide clips. It is movable in 4 directions by using the stage control. Okay, so stage के ऊपर आप अपना एक specimen रखते हैं और फिर आप observe करते हैं. The coarse and fine focus knobs. These move the stage towards or away from the objective lenses, depending on which way it is turned. The coarse focus. Alright, so ये आपके objective lens है और ये आपकी stage है. So our meeting is going to end in bubble. Okay, all right. So ये आपके objective lens है और ये आपकी stage है. अब ये coarse knob क्या करेगा कि ये coarse knob help करेगा कि आपने अपनी stage को कितना ऊपर move करना है to get a more clear view here, या फिर आपने कितना नीचे move करना है कि आपको clear view मिले. Mostly O levels के अंदर हम लोगों ने onion epidermis को study किया होता है, onion epidermis cell को study किया होता है, तो हमें थोड़ा सा idea होता है ये कैसे हम इन चीज़ों को use करते हैं, because onion epidermis या कोई भी आप अपना specimen लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा clear view provide नहीं करेगा. Knob brings the specimen into focus. The fine focus fine tunes and increases the detail of the specimen. The lamp. This is the light source for the microscope. The lamp brightness can be adjusted using the dimmer. The diaphragm. This is a rotating disc found under the stage. It varies the light intensity that is projected upwards into the slide. The base. This is the bottom of the microscope and is used for support. The base should also be used along with the arm when carrying the microscope. Now, let's review all the parts at once. Alright, so these are the basic and the simplest parts of a microscope जो कि आपको याद रखने, इसके अलावा कोई भी कहीं भी आपको parts आपने याद नहीं रखने. But for the AS level or the A levels के लेवल में आपको पता होना चाहिए कि बैरल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आर्म क्या होता है, आई पीस क्या होता है, किधर होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं basically. I hope I am not boring you guys with these videos, because visual representation is one of the educational theories जो कि कहा जाता है teachers को, educators को कि use करें for their students ताकि उनको more clarity हो on the subject, right? Now, moving towards this video we will be seeing in the next class, or hopefully देखते हैं इसको. Now, this is basically वही बात हमने की है कि किस तरह से एक light microscope है, उसके अंदर क्या क्या है. So there is an ocular lens, there is an arm, there is a stage,
there is coarse adjustment, fine adjustment, base, light, diaphragm, stage clips, objectives, nose piece, and body tube. And what is this basically? ये आपको बताता है कि किस तरह से एक लाइट माइक्रोस्कोप वर्क करता है, किस तरह से एक लाइट माइक्रोस्कोप काम करता है. एक लाइट सोर्स होता है. मोस्टली क्या होता है कि इस लाइट सोर्स के अंदर कुछ माइक्रोस्कोप्स के अंदर लैंप लगा होता है छोटा सा जो आपको लाइट बीम प्रोवाइड करता है. ठीक है. और कुछ में ये होता है कि आप सन के अंदर रखते हैं और वो रिफ्लेक्ट करना पड़ता है मिरर, ताकि आपकी लाइट एक कंडेंसर में जाए. जब ये लाइट कंडेंसर में जाएगी तो ये स्पेसिमेन को क्रॉस करती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस से ये मैग्नीफाई होगी थ्रू दी प्रोजेक्टर लेंस, और आपको आपके आई पीस के थ्रू आपकी आई के अंदर एक मैग्नीफाइड, एक क्लियर इमेज nazar aa jayegi of a specimen whenever you are going to use the light microscope. So this was all about the light microscopes. First of all, what things are you going to remember are the parts of the electron microscopes, how कि किस तरह से काम करता है, how is it going to work, and ये किस तरह से इसकी magnification and resolution होता है. And I hope to cover this up, this electron microscope. Now this is an electron microscope in a real life. एक real life electron microscope इतना ही बड़ा होता है और इस तरह से इसके साथ चीजें attach होती हैं. ठीक है. And we studied कि एक specimen light microscope में किस तरह का होना चाहिए. The dehydrated and the obviously dehydrated होना चाहिए, and the other three points. And this is how एक electron microscope का specimen होना चाहिए. Has to be dead, has to be thin, has to be in a vacuum. What do we mean when we say that it has to be dead? To be dead का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने लाइट माइक्रोस्कोप में आप एक रियल एंट रख देते हैं, ठीक है, वो ऑब्जर्व करके आपको बता देगा. बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप एक रियल एंट नहीं रख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पर्पस फंक्शन कुछ और है, व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. तो एक एंट को अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख दिया आपको, नहीं वो कोई भी इमेज प्रोवाइड करेगा. थिन होना चाहिए आपका स्पेसिमेन, थिन होना चाहिए, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास करने, अगर आप एक थिक चीज के अंदर एक थिक स्पेसिमेन बना देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पास आउट नहीं करेंगे उसके अंदर, राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इनर, किस तरह से वो काम करता है. देयर इज अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट shows the image of the specimen, whereas this is an electron gun and node. यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स बीम प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर इस पूरे स्टेप्स के थ्रू ये पास आउट होते हैं और फिर आपकी स्क्रीन प्लेट पे इमेज शो होती है. एंड द स्क्रीन एंड प्लेट इज कनेक्टेड टू अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ स्क्रीनर. So easy words में electron microscope में क्या होता है कि image of specimen is produced through the beams of electrons, and live cells cannot be imaged by this. Always need to put a dead specimen. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आपकी ये बुक से ही इमेज हमने ली हुई है फॉर योर क्लैरिटी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. अब इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसर इलेक्ट्रॉनिक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एग्जाम में आपको ये नहीं मारेंगे का, एग्जाम में आपको ये कहेगा कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स, स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए और किन कंडीशंस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे या क्यों हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. नाउ electron microscope, we discussed that there are two types of electron microscope. One is the transmission electron microscope, which is named as TEM, and then there is another scanning electron microscope, which is SEM. Transmission electron microscope or scanning electron microscope कैसे होता है? Transmission electron microscope allows electron to pass through. You could see inside cell. Very clear. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, हमें इनसाइड द सेल स्ट्रक्चर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू. व्हाइल अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू गेट अ 3D स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ स्पेसिमेन. आउटसाइड ऑफ स्पेसिमेन वो आपको दिखा देगा किस तरह से एक स्पेसिमेन, फॉर एग्जांपल एक एंट को ऑब्जर्व करें आप थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो बता देगा कि एंट की आईज इस तरह की हैं, एंट की लेग्स ऐसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे तो आप इसके सेल्स देखेंगे एक एंट के.
This is different ये एक table है जो कि differentiate करता है between the scanning electron microscope and the transmission electron microscope. We'll discuss it in the next class. ठीक है, अभी हम इसको will be concluding this lesson today in जिसको देखिए now. This is a light microscope, this is an electron microscope and this is a scanning electron microscope की images. हमने कहा कि scanning electron microscope बताता है कि एक outside of the cell का structure कैसा है. ठीक है, ये आपको पता चल गया. Red blood cells में कैसे पता चला था कि वो उनकी थोड़ी सी जो belly होती है ये flat होती है. Scanning electron microscopes के through हमें पता चला था. And in this हमें पता चल रहा है कि as we studied कि it shows outside of the cell. तो अब एक specimen को आप observe करें, एक ant को observe करें तो आपको पता चल रहा है कि एक ant किस तरह से है. Okay? While एक scanning electron microscope का आपको पता चल, इसी तरह light microscope की images हमेशा इसी तरह होंगी, rough images होंगी, आपको clearly पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है. And the transmission electron microscopes are always going to show inside the cell. Inside the cell आपको ये बताएगा कि इस cell का cell wall किधर है and other things. ठीक है, so today we talked about the scanning electron microscope की images, the transmission electron microscope की images, and what are the three types of electron microscopes used in biology. And obviously we talk about the basic concept. We'll be inshallah doing some practice related to it, and other stuff we'll be talking about how is an electron microscope different from the light microscope, and how is the scanning electron microscope and the transmission electron microscopes are different. So we concluding this class here. I'm signing out. Take care. Allah Hafiz.